Hello and welcome in this new lecture for literary theory. And in previous lecture, we have discussed the key points and introduction of post-structuralism. And thereafter, in today's lecture, we will be discussing on Jack Derrida. Okay, so here is first of all a few basic biographical details about Jack Derrida, that he was born in 1930s and died in 2004, and he was born in Algeria. Remember this point. This thing has been asked that where Jack Derrida was born. Okay, Jack Derrida's birthplace has been asked in your examination. That's why this is important point. And thereafter, second thing is that he was a French philosopher, and he is best known for his developing form semiotics analysis of deconstruction. डेरिडा को विशेष रूप से किस लिए जाना जाता है? डिकॉन्स्ट्रक्शन के लिए. अच्छा, इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेमस कोट है, दैट इज देयर इज नो आउटसाइड टेक्स्ट. ठीक है, तो ये लाइन एज इट इज आप नोट कर लीजिए, देयर इज नो आउटसाइड टेक्स्ट. ठीक है, तो नो आउटसाइड टेक्स्ट, ये चीज याद कर लें, दैट इज डेरिडा की लाइन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पर्पज से. ठीक है, एंड नेक्स्ट थिंग दैट विच ही एनालाइज इन number texts, numerous texts, and developed in context of phenomenology. ठीक है, तो phenomenology के context में इन्होंने deconstruction को develop किया था और उसी deconstruction के लिए इनको विशेष रूप से जाना जाता है. आगे समझते हैं. he is one of the major figures associated with पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म. सामान्य सी बात है, हम लोगों ने इसकी डिस्कशन पहले कर चुके हैं. एंड पोस्ट मॉडर्न फिलोसफी. ठीक है, तो पोस्ट मॉडर्न फिलोसफी हम लोग आगे समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं. आपके एग्जामिनेशन के पर्पज से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो चीज़ें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. अच्छा, इनके कुछ की कॉन्सेप्ट हैं जिसको समझने की विशेष रूप से ज़रूरत है, जो कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और डिकॉन्स्ट्रक्शन का बेसिस है. उन कॉन्सेप्ट्स में से आप ध्यान दीजिए, दैट इज एपोरिया, डिफरेंस एंड मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस. ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं और दीज आर द बेसिस ऑफ डिकॉन्स्ट्रक्शन. ठीक है, और इन्हीं के बेस पर इन्होंने स्ट्रक्चरलिस्ट आइडियाज को रिजेक्ट भी किया था. और दूसरी तरीके से देखा जाए तो इनका ओरिजिन भी स्ट्रक्चरलिस्ट आइडियाज से ही है, फिर भी इन्होंने स्ट्रक्चरलिस्ट आइडियाज को रिजेक्ट किया है. ठीक है, इनके वर्क्स की अगर बात करें तो इनके वर्क्स में, अच्छा, कुछ एक वर्क्स की हम लोग चर्चा पहले भी कर चुके हैं, दैट इज स्पीच एंड फिनोमेना. नेक्स्ट वन इज ऑफ ग्रामेटोलॉजी, राइटिंग एंड डिफरेंस, एंड देयरआफ्टर मार्जिन्स ऑफ फिलोसफी, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा वर्क? ऑफ ग्रामेटोलॉजी, जिसकी चर्चा हम लोग बहुत पहले कर चुके हैं. और आपको ये बात भी ध्यान रखनी है, दैट इज दिस वाज translated by Gayatri Chakraborty Spivak. Okay, then we'll move next. We have to discuss his deconstruction. Actually, what deconstruction is. First of all, moving to other details, we have to understand what actually deconstruction mean. Deconstruction का literal meaning क्या है, ये हमें समझने की जरूरत है, समझने की कोशिश करनी चाहिए. Deconstruction actually the reverse process of construction. Construction is just like synthesis, means we construct a structure, we construct something by consisting its separate parts. Just like if we say that we are building or we are constructing a house, then we'll assemble all the parts, that is bricks, cement, मोरंग, etc etc. जो भी चीजें होती हैं इनको हम लोग क्या करते हैं, एक साथ असेंबल करते हैं. ठीक है, सिंथेसिस करते हैं और उनको एक ऑर्डर में लगा करके हम क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं, वी कंस्ट्रक्ट अ स्ट्रक्चर. ओके, सो deconstruction is the reverse process of construction. Deconstruction means to reduce, to decompose some structure in its components. Suppose that हमने कोई घर बना रखा है और उस घर को हम क्या करें, उस घर को
डिकम्पोज करते हैं, यानी कि उसके जो भी पार्ट्स हैं, जो भी खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, ईंट है और भी जो चीज़ें हैं, उनको हम क्या करें, अलग अलग पार्ट में करके उसको समझने की कोशिश करें। देन दिस इज नोन एज deconstruction. Okay, so this is an approach to understand the relationship between text and meaning. और इसका जो बेसिक अप्रोच है वो मीनिंग को समझने का अप्रोच। टेक्स्ट और मीनिंग का क्या रिलेशन बनता है, कैसे टेक्स्ट मीनिंग को प्रोड्यूस करता है, इसी रिलेशन को समझने के लिए डिकॉन्स्ट्रक्शन किया जाता है। डिकॉन्स्ट्रक्शन इज अ टेक्निक टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन टेक्स्ट एंड मीनिंग। ओके, एंड thereafter it was originated by the philosopher जैक डेरिडा। ठीक है, इसका जो ओरिजिन है किसमें है, जैक डेरिडा के वर्क्स में है। Jack Derrida's book that was published in 1967, titled Of Grammatology, which was later translated into English by Gayatri Chakrabarti Spivak. Okay, the majority of ideas influenced within deconstruction. तो जो इनका वर्क ऑफ ग्रामेटोलॉजी है उसमें इन्होंने अपने मेजॉरिटी आइडियाज जो कि डिकॉन्स्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं उसको इन्होंने वर्क में लिखा है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट हिज अदर वर्क्स directly relevant to the concept of deconstruction, such as difference, speech and phenomena, and writing and difference। ठीक है, तो ये कुछ और इनके वर्क्स हैं जो कि डिकॉन्स्ट्रक्शन और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से डायरेक्टली रिलेटेड हैं और रेलेवेंट हैं। We'll move next. That is first concept here by Derrida is transcendental signified. Actually, this concept was borrowed from Saussure. Saussure's idea was that there is some transcendental signified, that unique signified that signifies all and everything. And here is the he is talking of God. That is, God is also a transcendental signified। ठीक है, तो यहाँ जो गॉड की परिकल्पना है वो भी क्या है, एक ट्रांसेंडेंटल सिग्निफाइड है। तो ये एक्चुअली में क्या है, एक लाइन यहाँ पर जरा सा लिख करके आप चीज को समझिएगा। दैट इज एन आउटसाइड एंटिटी, एन आउटसाइड एंटिटी that fixes the meaning of the text within the structure। तो क्या कह रहे हैं, दैट इज एन आउटसाइड एंटिटी। सो ट्रांसेंडेंटल सिग्निफाइड इज एन आउटसाइड एंटिटी, एक बाहर की चीज होती है जो क्या करती है, दैट फिक्सेस द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट विद इन स्ट्रक्चर। ये होती तो आउटसाइड चीज है, आउटसाइड एंटिटी है, बट ये एक्चुअली में मीनिंग को स्ट्रक्चर में, जो टेक्स्ट का स्ट्रक्चर है या जो भी स्ट्रक्चर में हम उस मीनिंग को समझ रहे हैं, वर्ड की बात करेंगे, टेक्सटुअल रेफरेंस में बात करेंगे तो वहाँ टेक्स्ट और वर्क की ही बात करेंगे। तो जो टेक्स्ट है उसकी मीनिंग जो है उसको टेक्स्ट और वर्क के स्ट्रक्चर में फिक्स करता है उसकी मीनिंग को। ये कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने ट्रांसेंडेंटल सिग्निफाइड का। अगला जो कॉन्सेप्ट डेरिडा का आता है दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंस। ठीक है, अब यहां पर आप स्पेलिंग पर जरूर ध्यान दीजिएगा, दो वर्ड्स हैं। ठीक है, दैट इज डिफरेंस, एक तो है क्या, डिफरेंस। ठीक है, ये वर्ड है डिफरेंस और यही थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो कि किससे बन के मिल करके बना हुआ है, एक है डिफर।
एंड दूसरा है डेफर। ठीक है, तो डिफरेंस इज constructed with two elements, that is difference and deference. Just pay attention to the meaning, to the spelling. That is difference, 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 and defrence, difference। ठीक है, सो डिफर एंड डेफर। देन हमको इसकी मीनिंग भी समझनी होगी। देखिए डिफर क्या है और डेफर क्या है। डिफर एक्चुअली ये क्या है, डिफरेंस है। ठीक, डिफरेंस विद अदर एलिमेंट्स और सिग्निफायर्स। ठीक है, जो दूसरे सिग्निफायर्स हैं, कंसर्निंग सिग्निफायर्स हैं, उनसे डिफरेंस है। एंड दूसरा जो कॉन्सेप्ट है दैट इज पोस्टपोनमेंट। ठीक है, डिफर मीन्स पोस्टपोनमेंट। ठीक है, पोस्टपोनमेंट मीन्स सजेस्टिंग to the other, suggesting to the other signifier। ठीक है, तो जो अदर सिग्निफायर्स हैं उनको सजेस्ट करता है। अच्छा, अब यहाँ पर डिफरेंस एक्चुअली समझिएगा। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चरलिज्म, दैट इज आइडिया ऑफ सेश्योर, एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, वेयर Jack Derrida is differing from, is against of the idea of Cheshire. So structuralism thinks that the word mean because the word is different from other signifiers. Okay, just word take as signifier. If there is some signifier and it is giving some meaning, then this signifier is giving the meaning because of the absence of other signifiers। but डेरिडा का आइडिया क्या है, डेरिडा ने कहा कि नॉट ओनली डिफरेंस बट पोस्टपोनमेंट। अकॉर्डिंग टू डेरिडा देयर इज नो फिक्स मीनिंग ऑफ एनी सिग्निफायर। किसी भी साइन या सिग्निफायर की कोई फिक्स मीनिंग नहीं है। फ्रॉम डिस्कोर्स टू डिस्कोर्स there will be different meaning of same signifier। For example, if there is a sign that is tree, means a structure which have trunks, branches, leaves and etc things and is a living one according to science। okay, suppose that ये एक मान लो ये एक sign है, that is this is the sign। okay, this is the sign and this is tree in English and पेड़ in Hindi, and there are several other words in different languages। and there is another thing, that is here is a sound, that is banana। okay, and there is also another word in Hindi, that is banana। okay, but these two words mean differently। here banana is a noun and referring to a fruit, but here banana is a verb, or we can say that this is a gerund and our infinitive, that is working as a noun। okay, तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि अकॉर्डिंग टू डेरिडा, सॉरी जैक डेरिडा, दैट इज की जो मीनिंग है, मीनिंग इज नॉट फिक्स and even sign is also not fixed।
ठीक है, तो मीनिंग फिक्स नहीं है, बट क्या होती है, मीनिंग पोस्टपोन होती है. सपोज दैट वी आर जस्ट टॉकिंग ऑफ cat, then the cat will be postponed to various types. It's like black cat, white cat. Okay, then if we are talking that is black cat, then cat is postponing its meaning to black, and black will postpone meaning to something others. So here we can understand that if there is postponement of meaning, suppose that there is signifier a, signifier a will suggest some signifiers in difference with, that is, here is late in meaning is late. Okay, and due to difference, due to postponement to the other signifieds. ठीक है, इतनी बात आपको आई होप कि समझ में आ गई होगी. आगे बढ़ते हैं, जरा सा देखिएगा. नेक्स्ट जो आपको टर्म मिलेगा, दैट इज मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस. मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस इज आल्सो related to the term that is known as difference, differ, and differ. Okay, so here in this point, uh, metaphysics of presence is actually prevailing presence over absence. Okay, prevailing, just note down this line, prevailing prevailing presence over absence. ओके, सो ये मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस क्या कहता है. अभी हम लोगों ने बात की कि मीनिंग एक्चुअली क्यों जनरेट हो रही है. मीनिंग इज जनरेटिंग बिकॉज the signifier is postponing its meaning to the other signifier. Okay, so and here the other thing is that there is difference and there is difference. Okay, so according to post-structuralism, according to Jack Derrida, meaning is produced not by absence but by presence. Okay, a word or a signifier is not giving meaning because the other signifiers are absent, but they are producing meaning because the other signifiers that are related to it is also available. ठीक है, तो जो प्रेजेंस है उसको ज्यादा प्रिविलेज मिल रहा है किसकी अपेक्षा, जो एब्सेंट है. ठीक है, तो जो एब्सेंस है उस पर मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस को वरीयता देना, ठीक है, प्रिविलेज देना, दैट इज मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस. ओके, एंड जस्ट मूव टू नेक्स्ट, दैट इज अपोरिया. अपोरिया इज अ वर्ड originally come from Greek language. ठीक है, and in philosophy means a philosophical puzzle or a state of being in puzzle, and a rhetorically useful expression of doubt. You have to pay attention at the last line, that is rhetorically. अगर हम अपोरिया की बात रिटोरिक्स में करें, लिटरेचर और लैंग्वेज के संबंध में करें, then this aporia means that useful expression of doubt. ठीक है, डाउट का यूजफुल एक्सप्रेशन, दैट इज अपोरिया. and in philosophy aporia is like puzzle. Clear? And move to the next point, that the term has more been associated with deconstructive criticism, especially with Derridian theory, especially with Derridian theory of difference. Okay, and denoting a point of undecidability which locates the site that which the text most obviously undermines.
mine its own rhetorical structure, dismantles dismantles or deconstructs itself. एक्चुअली यहां कह रहे हैं कि द टेक्स्ट मोस्ट ऑब्वियसली अंडरमाइंस इट्स ओन रिटोरिकल स्ट्रक्चर। भाई टेक्स्ट ये कहता है कि उसका अपना रिटोरिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए, किस लिए? टू dismantle or deconstruct the things related to the signifier। ठीक है, तो यहां पर आपको बात समझना चाहिए, दैट इज अपोरिया क्या है? अपोरिया इज जस्ट associated with that is the undecidability। ठीक है, ये अपोरिया का एक्चुअली अनडिसाइडेबल कंडीशन है। ठीक, अनडिसाइडेबिलिटी थोड़ा सा आगे जरा और समझेंगे, थोड़ा सा क्लियर होगा। डेरिडा फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जांपल डेरिडा ने क्या कहा कि सिटीज द इनहेरेंट contradiction at work in Jean-Jacques Rousseau's use of words culture and nature, by demonstrating that Rousseau's sense of the self innocence in nature is already corrupted by the concept of culture। ठीक है, तो यहां पर अभी हम लोगों ने बात की थी कि ये क्या है कि एक्चुअली में जो अपोरिया है, अपोरिया इज एक्चुअली में क्या है? पॉइंट ऑफ अनडिसाइडेबिलिटी। ठीक है, तो ये अनडिसाइडेबिलिटी की कंडीशन है। आगे जरा सा समझिएगा, तो उसी चीज को यहां कह रहे हैं कि भाई जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि रूसो जो है कल्चर और नेचर की बात करते हैं, वहां पर जो उनका कल्चर और नेचर का आइडिया है, एक्चुअली जो रूसो कहते हैं दैट इज ही इज इनोसेंट, हिज सेल्फ इज इनोसेंट एंड ही इज टॉकिंग अबाउट नेचर। So this idea is also corrupt idea. This concept is not valid. Okay. In the same manner. Next, that is aporia is identified as a difficulty, impasse। जैसा ये जो definition है ये आपके काम की है। A difficulty, impasse or point of doubt and indecision। aporia is actually क्या है कि किसी डिफिकल्टी कंडीशन में डाउट है। ठीक है, पॉइंट ऑफ डाउट है, इनडिसीजन की कंडीशन है, ये क्या है? दिस इज अपोरिया। while also nothing that critics such as Jacques Derrida have employed the term to indicate a point of undecidability। और जैक डेरिडा ने क्या कहा? दैट इज दिस अपोरिया इज अ पॉइंट ऑफ अनडिसाइडेबिलिटी। क्लियर, यही बातें घूम फिर करके करें, मींस कि जहां पर कंडीशन, दैट इज हैमलेट इज इन अ कंडीशन ऑफ अपोरिया, he is in great dilemma, he is in a condition of undecidability, okay, which locates the site of which the text most obviously undermines its own rhetorical structure, dismantles or deconstructs itself। ठीक है, तो यहां पर कह रहे हैं कि विच लोकेट्स द साइट एट विच द टेक्स्ट मोस्ट ऑब्वियसली अंडरमाइंस। ठीक है, ये जो अनडिसाइडेबिलिटी है वो कहां पर लोकेट होती है? जहां पर टेक्स्ट जो है अंडरमाइन करता है, रिटोरिकल स्ट्रक्चर के लिए करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंपल सी बात एक याद रखनी है, दैट इज अपोरिया इज कंडीशन ऑफ अनडिसाइडेबिलिटी। नेक्स्ट जो टर्म यहाँ पर हम लोगों को मिल रहा है, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट मिलता है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लोगोसेंट्रिसिज्म। ठीक है, लोगोसेंट्रिसिज्म डेवलप्स विद द वर्ड लोगस। ओके, लोगस मींस दैट इज फाइनल ट्रुथ। तो a term coined by German philosopher Ludwig Klages, remember the name Ludwig Klages, coined the term logocentrism in the earlier part of 1900s। ठीक है, 1900s के अर्ली पार्ट में जो है लुडविग क्लैगस ने जो है इस टर्म को पहली बार कॉइन किया था।
and this logocentrism is developed from logos. Okay, this logos is the final truth, the ultimate truth, the real truth, or we can say that universal truth. But remember that here in post structuralism or in general condition, there is no universal truth. This is my own statement and of some other great critics and thinkers, that there is no ultimate meaning. There is no final and universal truth. So, logocentrism is talking of final truth. The logos is the ideal representation of the Platonic ideas. जो logos है वो क्या चीज है, वो प्लेटोनिक आइडियाज का एक एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है. And thereafter Saussure follow the logocentrism or logocentric line of thought in the development of his linguistic sign and its terminology. ठीक है, तो सश्योर ने क्या यूज किया, सश्योर ने लोगोसेंट्रिसिज्म का यूज किया और उसी के थ्रू जो है अपनी चीजों को डेवलप करके स्ट्रक्चरलिज्म की थियरी दी. And their next point is that is phonocentrism. Phonocentrism is actually the belief that sound and speech are inherently superior to or more primarily than written language. देखिए, फोनोसेंट्रिसिज्म का जो फोकस है वो किस पर होगा, वो वोकल लैंग्वेज पर होगा, जो मौखिक भाषा है उस पर होगा. इसके पहले हम लोगों ने जो समझा, लोगोसेंट्रिसिज्म को समझा, वहां पर जो है सारा फोकस वोकल लैंग्वेज पर नहीं है, वॉइस पर ही सारा फोकस इसका नहीं. ओके, एंड डेरिडा बिलीव दैट the binary opposition between speech and writing is a form of logocentry. ठीक है, जो सश्योरियन आइडिया है, जो आइडिया किसका है, दैट इज द आइडिया ऑफ जनरल लिंग्विस्टिक्स एंड ऑफ सश्योर, दैट इज रिलेटेड टू लोगोसेंट्रिज्म. और वहां पर कह रहे हैं बाइनरी अपोजिशन आएगा. ठीक है, और डेरिडा का क्या बिलीव है, डेरिडा बिलीव दैट द बाइनरी अपोजिशन बिटवीन स्पीच एंड राइटिंग इज अ फॉर्म ऑफ लोगोसेंट्रिसिज्म. और ये जो बाइनरी अपोजिशन है, स्पेशली किसका एग्जांपल देते हैं, दैट इज स्पीच एंड राइटिंग. मींस स्पीच इज फोनोसेंट्रिसिज्म, राइटिंग इज लोगोसेंट्रिसिज्म, और इसके बीच का जो रिलेशन है, जो अपोजिशन है, दैट इज आल्सो इज लोगोसेंट्रिसिज्म. क्लियर है. आगे नेक्स्ट देखेंगे. नेक्स्ट है राइटर मिशेल फूको, एंड नॉट big critic, big writer, but we have still understand some points, we have to write some points. And after Michel Foucault, there are one or two other minor critics related to post structuralism. We'll discuss them in next class. So we'll try to complete Michel Foucault and the other writers. I think there are two. Okay, and in next class thereafter we'll move towards postmodernism, modernism, and rest the theories. And thank you for the class.